देश के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री भारत रत्न स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है। भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का जो संकल्प लिया, उसका परिणाम है कि आज स्टैचू ऑफ यूनिटी के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के आसपास आज एकता नगर की जो स्थापना हुई है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होने जा रहा है, जहां पर्यावरण और जलवायु संरक्षण के साथ साथ राष्ट्र की जो अनेकता में एकता और हमारी देश की विविधताओं का जो एक अद्भुत संगम उस एकता नगर में जिस प्रकार होने जा रहा है और जिस प्रकार हो रहा है लगातार निरंतर, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश को जो 565 रियासतों में बिखरा हुआ था, उस पूरी 565 रियासतों को एक करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उस समय जब भारत का विभाजन हुआ और भारत और पाकिस्तान दो देश अलग अलग बने, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में इस तरह तीन हिस्से भारत के हो गए। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी कर्मशीलता, अपने नेतृत्व कुशलता के कारण सारे रियासतों को या तो मजबूर किया कि वे झुकें, या उनको निवेदन किया और प्रेम से, और जो प्रेम से नहीं माने, जैसे भोपाल और हैदराबाद और जोधपुर एक ऐसी स्टेट्स थी जिन्होंने पाकिस्तान में जाने की इच्छा की, लेकिन ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ थी कि उस समय ये देश एकता के सूत्र में बन सका। सबसे अंत में जो जुड़ने वाली स्टेट थी वो भोपाल थी। हमारे मेवाड़ का भी एक प्रसंग आता है कि जोधपुर नरेश ने मेवाड़ नरेश को, महाराणा साहब को कहा कि हम क्यों नहीं पाकिस्तान में मिल लें। तब महाराणा साहब ने स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया कि मैं पाकिस्तान के साथ नहीं जाऊंगा। और ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि उदयपुर मेवाड़ स्टेट सबसे पहले भारतवर्ष का हिस्सा बनी। ये हमारे मेवाड़ के लिए भी गौरव की बात है, क्योंकि सबसे पहली स्टेट थी जिसने ये डिक्लेयर किया कि हम हिंदुस्तान में अपने आप को मर्ज करते हैं। उसके बाद कालांतर में जो प्रीवी पर्स जो फैसिलिटी इन राजघरानों को मिलती थी, वो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इसको बंद किया और भारत की इस एकता और अखंडता को, इस संप्रभुता को और भी प्रबल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज उनका भी हम स्मरण करते हैं। आज के दिन हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के, जो कि भारत रत्न थे, निश्चित रूप से हम राष्ट्रीय एकता के रूप में आज 75,000 स्थानों पर एक साथ एकता दौड़ का आयोजन भी किया गया। हम सब मिलकर उनके द्वारा स्थापित ये अखंड भारत की जो एक परिकल्पना नहीं है, एक वास्तव में सांस्कृतिक अखंड भारत तो आज भी है, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से भारत खंडित हो चुका है। लेकिन हम ऐसा मानते कि एक न एक दिन ऐसा होगा, भारत की जो अखंडता है वो वापस कायम हो सकेगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के श्री चरणों में शत शत नमन करते हुए आइए हम राष्ट्रीय एकता के इस महामंत्र को, एकता के नाद को हम निरंतर गाते चलें और अनेकता में एकता हिंद की विशेषता का जो ये गान है, ये निरंतर हम गाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः सरदार वल्लभ भाई पटेल को शत शत नमन, शत शत नमन। He just threw that pillar out of the ground. He took it out and threw it. The other fellow students, mates, they just told him that this might be a divider which has been installed by one of the farmers. At that time he said, I don't like the division of this motherland. And the same he did when in 1947 India got freedom. He had issues with
Ranjit Singh of Kashmir, even the Jodhpur state, Junagadh state, Hyderabad, all these states, they were not in favor, but still through his diplomatic decision making, he forced them to be the part of India. And because of that only, whatever the world map which we are seeing today, it's only because of the work done by Sardar Patel. He was so strong within. During his childhood, he had a wound, and which was not recovering. It was an irrecoverable. His parents consulted so many doctors, Vaidya, but still nobody could heal that wound. Then somebody told that if you put a hot iron rod, but on the wound it might recover, but it will be very painful. Sardar Patel did that, and from that day, the villagers, they just named him as the Iron Man. Children, in every Jayanti I say, celebrating the Jayantis are not important. The only important thing is to imbibe the qualities, to inculcate those qualities among ourselves, so that we can become a fraction of them. If we become a part of them, if we take any one single quality of those personalities, we can become a good citizen of this nation. Patel, he was a barrister. He was doing his practice in England, but he was inspired by Mahatma Gandhi, and in Champaran movement, he came back. He was so dedicated to his work that he forgot his family, his children, and as one of the girls said about that, when he was in the middle of a hearing, he got information about the demise of his wife, but he continued his hearing. That shows the dedication and the commitment. And that's what we need, that whatever work we do, we should be dedicated and committed to that. That determination is required. Just keep yourself away from the screens, whether it is mobile or the television, just keep it away. Then only you can focus on your goal, your aim. And it's not only for the board classes, it is for everyone. If you want to have a sound sleep, just before you go to bed, at least 1 hour before, you should stop watching any type of screen. Instead, you should read out some good motivational stories. In that way, your vocabulary will improve, your reading habits will improve, your mental health will improve. Just read out some stories. And it's my request to all the teachers teaching general knowledge, general studies, that they must assign this task, this as a homework, that every day, at least one inspirational story, whether it is in Hindi or in English, it doesn't matter. But they should study it. They should read out. So that we can learn something from it. Just scrolling on the reels and the shorts will not give you anything except wasting your time. As per the latest studies, now the mind of a youth is not working, and they are using only 32% of their brains. 68% brain is not working because of this scrolling on your mobile phones. So this is a big loss, because if we want to develop our nation, we need creative brains. We don't want the brains who are wasting their time on just scrolling the reels. It won't give you anything new. If you want to be creative, if you want to be productive, you have to think. And for
improving your thought process, you need something good to read out. If you have got something good, then you will definitely create something. So children, once again I wish you a very happy National Unity Day, and hopefully we all Indians are one and the same. Good morning to one and all present here. Today I am Arpita Kumar Jhala of class 11th Commerce is going to throw some lights on Sardar Vallabhbhai Patel. Sardar Vallabhbhai Patel, popularly known as Sardar Patel, and was India's first deputy prime minister. He was an active political minister who marked his participation in numerous movements in Indian freedom struggle. He was highly influenced by Gandhian principle and greatly admired Mahatma Gandhi. Much like Gandhiji, and Sardar Patel also promoted the concept of ahimsa to fight against the oppressive rule of colonial powers. And he once said, क्रांति का रास्ता कोई भी ले सकता है, लेकिन क्रांति को समाज को झटका नहीं देना चाहिए. Throughout his life, he strongly highlighted the necessity and integrity for a nation and emphasized the importance of unity for winning independence from British rule. Sardar Patel played a very remarkable role in the political unification of our country. He convinced all 562 princely states to unite for the formation of single Indian nation. With the successful integration of Indian states, he was later proclaimed as the unifier of India and the Bismarck of modern India. Thank you. शत्रु का लोहा ही गर्म हो, लेकिन हथौड़ा तो ठंडा रहकर भी काम दे सकता है. नमस्कार, मैं रिंकल जैन कक्षा 10वीं की छात्रा आपके समक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 145वीं जयंती पर भाषण प्रस्तुत करती हूँ. 562 रियासतों का एकीकरण करने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में हुआ. उनका जन्म गुजरात के नाडियाड में उनके ननिहाल में हुआ. वे खेड़ा जिला के कारमसमद में रहने वाले झावेर बा के चौथी संतान थे. उनकी माता का नाम लाडला पटेल था. उन्होंने प्राइमरी शिक्षा कारमसमद में ही प्राप्त की. बचपन से ही उनके परिवार ने उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया. 1893 में 16 साल की आयु में उनका विवाह जावेर बा के साथ कर दिया गया था. उन्होंने अपने विवाह को अपनी शिक्षा के मध्य नहीं आने दिया. उन्होंने अपने विवाह को अपनी पढ़ाई के रास्ते में नहीं आने दिया. 1897 में 22 वर्ष की उम्र में उन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास की. 1900 में जिला अधिवक्ता की परीक्षा में भी वे उत्तीर्ण हुए. 1904 में उनकी बेटी मणिबेन और 1905 में पुत्र दहिया का जन्म हुआ. बैरिस्टर कोर्स करने के लिए पैसों की बचत कर ली थी, परंतु अपने बड़े भाई विट्ठल की इच्छा पूरी करने के लिए खुद न जाकर उन्होंने 1905 में अपने बड़े भाई को इंग्लैंड भेज दिया. सरदार पटेल अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी, संपन्न व हिम्मत के साथ पूरा करते थे. उनके इसी गुण का प्रदर्शन हमें सन 1909 में प्रस्तुत करता है. वे कोर्ट में केस लड़ रहे थे. उस समय उन्हें अपनी पत्नी का मृत्यु तार मिला. पढ़कर उस पत्र को इस प्रकार रख लिया जैसे उसे पढ़ा ही ना हो. फिर आखिरकार उन्होंने 2 घंटे बहस कर वह केस जीत लिया. जब लोगों ने उनके इस व्यवहार के बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि उस समय मैं अपना फर्ज निभा रहा था, जिसका शुल्क मैं मुवक्किल के न्याय ने मुझे दिया है. परंतु जब गुजरात में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा द स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनाने की बात ऐलान की, तब लोगों ने उसका विरोध किया. तब दुनिया भर में लोग भारत में सबसे ऊंची प्रतिमा होने के बारे में पढ़ेंगे, इसका लोगों को कोई ख्याल नहीं आया. इंस्टाग्राम के ज़माने में उनके साथ खड़े रहकर सेल्फी लेना और पोस्ट करना जानते हैं, परंतु भारत की राष्ट्रीय निर्माण प्रक्रिया में सबसे महान वस्तु में से एक सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिए गए सम्मान के एक प्रमुख बयान द स्टैचू ऑफ यूनिटी को विरोध कर उस मूर्ति की लागत गरीबों में बांटने की बात करते हैं, और जब स्वयं के गरीबों में दान करने की बात आती है तब चुप हो जाते हैं. स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री को मैं नमन करती हूँ. Good morning everyone. Today's thought is try to be happy with the privilege that you have and don't feel bad about the things which you don't have, and just focus and keep trying to achieve them. Thank you. Today's news headlines are as follows. National news: over 100 dead in Morbi cable bridge collapse, 177 rescued so far, search on. Telangana government withdraws consent to CBI amid TRS MLA's poaching row.
International news. Brazil's Lula defeats Bolsonaro to win presidency again in stunning comeback. South Korea declares national mourning after 151 killed in Halloween stampede in Seoul. Sports news. Boulder Spain win FIFA's Under-17 Women's World Cup. T20 World Cups updated Group 2 points table after Indians lost to South Africa. Jamshedpur FC clinched first win as Northeast United FC remains as bottom. Today's temperature maximum 32 degrees Celsius, minimum 18 degrees Celsius. Thank you. Vande Mataram. Today Kodik of class 11 sciences is gonna tell you a short summary on a book written by one of the most intelligent of Mahabharata, Sir Chanakya. Sir Chanakya, known as Kautilya, wrote a book named Niti, explaining his view on life of a person, economic and administration. I am gonna tell you 3 life-changing tips from book Chanakya. First, if you have to choose between a venomous snake or a little person, you should choose a snake. Or snake might bite you, but a esteemed person might hurt 100 times by his wits. Might bite you. Second, a crow might sit on a high mountain or ring. It will not bite an eagle. From this, Sir Chanakya wants to indicate that a personality or a profile of a person doesn't build by his liabilities or his assets. The personality or profile of a person is enhanced by his good habits and his behavior. Third, the purity of a gold is tested by rubbing it, by burning it, and by hammering it. From this, a personality, the real personality of a person is known in his harsh time, not in the normal time. Whether it's a servant, your friend, or whatever. So, I know the return of Chanakya is 10 or thousands of centuries, but his concepts are also reliable in this time of metamorphosis. I solemnly pledge that I dedicate myself to preserve the unity, integrity, and security of the nation, and also strive hard to spread this message among my fellow countrymen. I take this pledge in the true spirit of unification of my country, which was made possible by vision and actions of Sardar Vallabhbhai Patel. I also solemnly resolve to make my own contribution to ensure internal security of my country. Jai Hind.